find happiness in all those things. And we search. So Coursera, you must be aware about that site. This is a very very known site by everyone, है ना. इस साइट के अंदर 3.4 million, actually this is the data in the year 2021 I collected this data. 3.54 million people took an online course on happiness, है ना. Happiness is so rare, no? If you will search on Instagram, you know, the most popular social media app among youth is Instagram, no. They upload everything on their feelings and everything. तो उसमें अगर आप सर्च करोगे hashtag happiness, more than 151 million posts are on happiness. Happiness is an industry worth $4.2 trillion. इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हैप्पीनेस की, है ना. there's an industry which make products, and those products which mention about happiness, which can give them happiness. Actually people, लोग क्या करते हैं, find करते हैं happiness on the things which are very limited. This is the problem, actually the root cause. क्या है root cause? कि we try to find happiness in those things which itself is temporary. Your smartphone, it may last for 10 years, maximum 15 years, will get bored, the happiness will be finished. Your t-shirts, है ना, बहुत funky t-shirts होते हैं youth में. You maybe have a bullet bike, है ना, your big car, that may give you happiness. But with that happiness, what happens? We are trying to find happiness in those limited things, so the happiness would be limited. Happiness limited हो जाएगी. But when we search happiness in those things, but we are eternal. If you know the concept of soul, we'll be discussing our in upcoming sessions next Sunday. What is soul? So we have an identity of eternity. So eternally we want to be happy. कौन चाहता है 24/7 खुश रहना? बताइए. Who all want to be happy 24/7? मैं तो चाहता हूँ. I want to be happy 20. Yeah, Devanshu wants it. No, he want to be happy 24/7. Nobody else. Yeah, people are writing on the chat box. Thank you so much, है ना. सब खुश होना चाहते हैं. So let's move ahead. So how the world is adapting for happiness. Universities like Harvard University, Cambridge University, ये क्या कर रही हैं? These universities are conducting seminars on happiness. Even they are launching the research, है ना. मतलब रिसर्च करना पड़ रहा है हमें on the topic of happiness, and how can we be happy? Because जिस भी चीज में हम happiness ढूंढते हैं वो temporary होती है. It may last for some days, for some years, then we get bored, then we get neutral to it, then the happiness is gone. No. तो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, और वो क्या कर रही हैं, वो कोर्सेज लॉन्च करती हैं किसके ऊपर? हैप्पीनेस के ऊपर. So there are the major scales which measures about happiness, like Steen Happiness Index, Subjective Happiness Scale, the Happiness Scale by Ford. तो ऐसे कुछ indexes हैं जो measure करते हैं about happiness. But here we are not going to measure the scale of happiness, but we have to find what is happiness and how can I get it. This is more important, no? As per the World Happiness Record, you will be shocked to know that India, I was searching for the data, you may search it afterward, कि India जो rank करती है ना happiness के data में, it was released on March 20 this year, it is 126th rank. 126 रैंक है उसकी out of 143. तो जो हम कितना लैक करते हैं as being Indians, जैसे जो हमारा natural instinct था to be happy. Actually, what is the reason? है ना कि हम 126th नंबर पे आते हैं, although we are advancing now. हम एडवांस कर रहे हैं, हम बहुत सारी एडवांसमेंट्स के जो सो कॉल्ड पैरामीटर्स हैं हम उनको फुलफिल करते हैं. स्टिल वी आर रैंकिंग एट द 126th रैंक.
we'll study further what is the reason, what is the cause. Actually we Indians are more more religious, है ना. सो हम इंडियंस के एक अंदर स्पेशल क्वालिटी है, हम डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे, क्यों हमें ये जो खुशी है ये हमें इन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में नहीं मिलती. विल डिस्कस इट. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट भगवत गीता सेज अबाउट हैप्पीनेस, है ना. पहले हम समझेंगे कि जो हैप्पीनेस है वो है क्या, है ना. कैसे कैसे लेवल्स हैं उसके. मैस्लो, मैस्लो एनी किसने पढ़ा है मैस्लो? वो वाला स्टडीड मैस्लो कभी? दे कैन राइट गेस, yes, no, yeah, no, okay. Anybody else? 11th में आता है, 11th 12th में अगर देखोगे तो this comes basically, it comes more in the economic side में आता है. ये जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं वो स्टडी करते हैं. मैंने भी अपने लॉ में स्टडी किया था इसको. चलो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट रिप्लाईज, है ना. तो मैस्लो जो है, मैस्लो ने 150 साल पहले एक 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 बड़े फिलंथ्रोपिक वर्कर थे ये. और क्या थे ये? बड़े सोशलॉजिस्ट थे, है ना. तो ये स्टडी करते थे, तो उन्होंने स्टडी किया और एक ग्राफ बनाया, द 5 लेवल्स ऑफ ह्यूमन नीड. तो जो सबसे बेसिक लेवल होता है एक ह्यूमंस के लिए वो क्या है? फिजियोलॉजिकल, है ना. कि भाई रोटी कपड़ा मकान, दिस इज द मोस्ट बेसिक, है ना. मोस्ट बेसिक फॉर एनी ह्यूमन नीड. देन कम्स, जब उसका ये सेटल हो जाता है क्या, कि भाई माय फूड इज सेटल्ड, माय वाटर, माय हेल्थ, मेरा ये सब सेटल्ड है. नाउ इट कम टू सेफ्टी, है ना. द सेकंड लेवल. देन लव, है ना. वी ऑल वांटेड टू बी लव्ड एंड वी ऑल वांट टू गेट लव्ड, है ना. हम चाहते हैं कोई हमें प्रेम करे और हम किसी को प्रेम करें, है ना. देन द मोस्ट देन इट कम्स सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. So these two, the self esteem and self actualization, is what is lacking. We all have a good family, है ना. तो हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं we are getting it, है ना. हमें सेफ्टी है, वी आर यूजिंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस, वी आर मोर केयरफुल नाउ, है ना. वी गेट एडवर्टीजमेंट अबाउट सोशल. as a law student I can tell you there's so many laws which governs our safety, है. So even cyber laws, IT laws, है ना. artificial intelligence के laws people they are framing now, है ना. and love we are getting from our family, relatives, but still we are not satisfied because the self-esteem and self-actualization is missing. This is Maslow who discovered it around 150 years ago. But our Bhagavad Gita, the Bhagavad Gita, which was spoken by Krishna to the Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, है ना. देखो भगवत गीता कैसा टेक्स्ट है, आप देखोगे कहाँ बोला गया है ये? कुरुक्षेत्र के युद्ध में, है ना. When there is a battle, है ना. बैटल मतलब एक इमरजेंसी की सिचुएशन है. कई बार लोग बोलते हैं सर दिस गीता इज नॉट रेलेवेंट इन माय लाइफ नाउ. नो, I am very busy with my medical research, I am very busy with my thesis, I am very busy with my research and all. I am very busy with writing my projects, my research files, my thesis and everything. So sir, this Gita I will study later because this Gita is not relevant. But I say to them, Baba, you see, this Gita was spoken to Arjuna on the field where it was the immense emergency, है ना. Arjun got confused what to do now. So similar is our situation, है ना. In life we are the most busiest, है ना. As students we have to study, we have to look over many other things. So हमारे लिए गीता ज्यादा relevant है ना. So Gita talks about Gita and there's a Taittiriya Upanishad, है ना, which says, मतलब Upanishad were written, we don't have the history also कि उपनिषद लिखे कब गए थे, है ना. It was compiled by Vyasadeva almost 5,000 years ago, but it comes on the system of it. तो 5 कोश के बारे में बताता है वो, है ना. बिगिनिंग फ्रॉम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, है ना. तो अन्नमय कोश क्या है? अन्न, फिजिकल बॉडी, है ना. यू केयर अबाउट योर फिजिकल बॉडी, है ना. देन प्राणमय, यू स्टार्ट थिंकिंग. मनोमय, you find happiness in the activities and the emotions develops. Then Vijnanamay Kosh and then Anandamay Kosh, है ना. It starts from Annamay Kosh and it end up to Anandamay Kosh. And what majority of people lie in these 3 कोशों में, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय में, है ना. ठीक है. So कैसे है ये?
सबसे पहले अन्नमयी कोश एक्सप्लोर करते हैं, and you see every species, whether it be animals, birds, humans, every living entity क्या करती है, इस अन्नमयी कोश को प्राप्त करती है ना. लाइक there's a bird, है ना, बर्ड क्या करती है, वो ढूंढती है ग्रेन्स, सम ग्रेन्स, एंड शी इज सेटिस्फाइड, नो. देन प्राणमयी कोश एक्सप्रेस क्रिया शक्ति, द पावर टू एक्ट, है ना. देन मनोमयी मेंटल बॉडी, इच्छा शक्ति, द डिजायर्स, है ना. नाउ कम द चेंज ना, ज्ञान शक्ति एंड आनंद, लाइफ गोल, एनलाइटमेंट. ये डिफरेंस है एक ह्यूमन स्पीशी और एक एनिमल स्पीशी में, है ना. एनिमल स्पीशी कैन गेट सेटिस्फाइड इन आनंदमय, अन्नमय कोश, बट हम क्या है, वी नीड आनंदमय, द ब्लिस, द हैप्पीनेस, द एनलाइटमेंट, है ना. So it is the reference. It was the concept of Panchakosh has been laid down by Taittiriya Upanishad. So अन्नमयी कोश, है ना. अन्नमयी कोश हम डिस्कस करेंगे सबको. तो अन्नमयी कोश क्या है, अन्न, अन्न शब्द इज अ संस्कृत वर्ड विच मींस फूड, है ना. तो क्या है, लोग खुश हो जाते हैं किसमें, कि भाई अच्छा खाने को मिल जाए. यू कैन सी सम पिक्चर्स हियर, है ना. दे आर वेरी हैप्पी ईटिंग बर्गर्स, है ना, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, पेस्ट्रीज. बट अब देखो, ये आपको हैप्पीनेस तो देगा, बट कितना टेम्पररी होता है ना. इतनी सारी रिसर्च हैं जिसको बताती हैं क्या, कि दिस फूड, द प्रोसेस्ड फूड इज वेरी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, है ना. बट क्या होता है, इट गिव यू इंस्टिंक्ट ऑफ हैप्पीनेस, है ना. बट कुछ समय तक आप इसको आप इसमें से हैप्पीनेस ड्राइव कर सकते हो, है ना. जैसे अगर किसी को बोला जाए, उसको बर्गर, उसको पिज्जा बहुत पसंद है. अब वो पिज्जा उसको बोला जाए, ठीक है आपको पिज्जा बहुत पसंद है, व्हाट विल डू, हम आपको तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में पिज्जा खिलाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिज्जाज वी विल गिव यू. बड़ा खुश हो जाएगा वो, यार सर मजे की बात कर दी आपने, मजा आ गया, है ना. बट क्या होगा, आप देखोगे जब वो खाएगा, ब्रेकफास्ट में खाया, बड़ा मजा आया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, है ना. फिर हमने इसको लंच में दिया, सर अभी ठीक है खा लेता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को. फिर डिनर में दिया हमने, खा लिया. अब नेक्स्ट डे हम सुबह दे रहे हैं, सर नहीं सर नहीं हो पाएगा सर, कॉन्स्टिपेशन हो गया सर, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर. क्यों भाई, आपको तो अच्छा लगता था पिज्जा, नहीं. सो दिस इज द हैप्पीनेस. कि क्या है, देखो आप देखोगे तो चेतना जो है वो लाई करती किसमें, ऑन वेरी सिंपल, मतलब डिपेंडेंट अपॉन द फूड फॉर एग्जिस्टेंस. दिस इज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ हैप्पीनेस, है ना. और क्या है, ये बड़ी टेम्परेरी. The same thing which were giving you happiness now is a troublesome process, right? So next, फिर आती है प्राणमय, है ना. प्राणमय, अब क्या है कि भाई एक हायर लेवल है. नाउ ही फाइंड हैप्पीनेस इन प्राणमय, की प्राण मतलब ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ हिज बॉडी, है ना. टेंडेंसी टू बी प्रोटेक्टेड, है ना. तो उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, साइबर क्राइम ये एंड एवरीथिंग, इतना गवर्नमेंट खर्चा करती है ऑन द प्रोटेक्शन, है ना. तो दिस इज प्राणमय. नेक्स्ट मनोमय, है ना. मनोमय इज लिटिल एडवांस्ड बिकॉज वी नाउ द इमोशंस कम, है ना. इमोशंस, है ना, इमोशंस लाइक एंगर, है ना, हैप्पीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसे इमोशंस में सोचना शुरू करता है वो, और कनेक्ट करता है अपने इमोशंस को ऑब्जेक्ट के साथ, है ना. देन ही फाइंड प्लेजर इन दैट, ही फाइंड डिस्ट्रेस इन इट, अनहैप्पीनेस, है ना. एक्टिविटीज बेसिकली, दिस इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, है ना. पहले हमने डिस्कस किया दैट इज ऑन डिपेंडेंट ऑन फूड, देन सेफ्टी. नाउ कम्स द एक्टिविटीज जो हमें प्लेजर देती हैं. सब में बी हैप्पी इन, हैप्पी हो सकते हैं वो डांस करके, नहीं. किसी को गाने बहुत, सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, है ना. somebody like to sing, somebody like to do now, अगर बोले अभी रिसेंट में तो लोगों को व्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती है ना. दे मेक्स व्लॉग्स, है ना, व्लॉगिंग करते हैं, है ना. अपनी एक्टिविटीज को डालते हैं. मैं देखता हूँ अभी पीपल आर मोर हैप्पी टू सी अदर्स कि वो क्या कर रहा है ना. यूट्यूब पे इतने सारे व्लॉगर्स हैं जो बहुत बेसिक बेसिक अपनी लाइफस्टाइल डालते हैं. पीपल इतना ईगर होते हैं उसको देखने के लिए, है ना. उनको लगता है यार उसको कैसे खुशी मिल रही है ना. सो वी फाइंड दैट फील्ड ऑफ हैप्पीनेस. अलग अलग चीजों में हम क्या करते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं. स्टिल क्या है, वी आर अनसेटिस्फाइड, है ना. वी फाइंड हैप्पीनेस इन ड्रग्स. अब वेस्ट में जाओगे, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, you see they're more advanced than us. One of my friend went to New York. अभी recently he went to New York. So मैंने उससे पूछा कैसा रहा एक्सपीरियंस. He was saying भाई देख यार, इंडिया इज द बेस्ट.
मैंने कहा क्यों, तेरा तो बहुत डिजायर था यूएस न्यूयॉर्क जाने का। तो कह रहा है डिजायर तो था, बट न्यूयॉर्क द सिटी इज मोर डर्टी, गंदी है, इतना सब गंदगी है वहां पर, द पाइल्स ऑफ गार्बेज इज लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क। दिस वाज हिज वर्ड एक्चुअली। सो आई सेड, तो वो कह रहा है यार कुछ भी हो, अपना भारत बहुत अच्छा है, नहीं भारत बहुत अच्छा है, हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम दिखती हो, बट स्टिल हमारी जो डिग्री ऑफ हैप्पीनेस है ना, वो बहुत एलिवेटेड है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे हम 126th रैंक पे क्यों है, although we have so much of luxuries comforts, नहीं, so people find happiness in drugs, stay high, है ना। उसको क्या लगता है कि जब मैं ड्रग्स ले लूंगा, ऐसे केमिकल्स ले लूंगा, तो क्या होगा, मैं कुछ समय के लिए क्या होऊंगा, भूल जाऊंगा अपने दुख, है ना। फियर, उसको उसको लगता है मैं अपने दुख अपने फियर्स को भूल जाऊंगा कुछ समय के लिए, बट यू सी दैट मे लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, नो, देन वी फाइंड हैप्पीनेस इन दीज ऑल एक्टिविटीज, है ना। देखो, इतना लोगों को लगता है कि यार मेरे को खुशी मिलेगी इन सब चीजों करने से, new hairstyle, people will find happiness in that. Western countries have reached the summit of material advancement, है ना। क्या होता है, बीइंग इंडियंस वी समटाइम व्हाट वी फील कि भी हम लैग कर रहे हैं एडवांसमेंट में, है ना, हम ज्यादा एडवांस कर जाएंगे, we have a big skyscraper buildings, best of the best cars, technologies and everything, then we may become happy. But my dear friends, the condition is not good in Western countries as well. I meet multiple people through the medium of Zooms, है ना, meetings, and I ask them, the students, what is your experience, है ना, they say, sir, we are not happy here. I say, why? It was your it was your desire to go to the Western countries because of the material advancement they have. Still, sir, they say, sir, I lack something, I'm not happy here. I may live in a big apartment, big house, you know, with a 24-story building, with a 50-story buildings in the US, but still I'm happy and I'm unhappy. You know, we may have a skyscraper buildings, jet planes, latest communication technologies, AI, artificial intelligence. You know, still, क्या है? The question is why I am suffering. You know, still, so this session is whole the whole purpose of this session is to make you think, you know, why I am suffering, you know. Despite what I discussed earlier, and despite of all this advancement, unfortunately the modern day human are dissatisfied, stressed, full of anxiety and depressed, and above all unhappy. I'll tell you a very funny story. What happens one time, बहुत एक अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक गांव के अंदर एक विदेशी, एक फॉरेनर, एक बहुत ही एडुकेटेड साइंटिस्ट जाता है। तो जब गांव में जाता है, तो जैसे ही इसको इसको क्या करना होता है, यू हैव टू क्रॉस अ रिवर, उसको एक रिवर क्रॉस करनी होती है। तो वो रिवर में बैठता है, और नाविक, सब समझते होंगे नाविक कौन होता है, द बोटमैन। तो जब बोटमैन उसको लेके जाता है रिवर के पास, तो क्या होता है, वो उससे बोटमैन से पूछता है साइंटिस्ट कि डू यू नो व्हाट इज फिजिक्स। तो वो कहता है, साहब हमें फिजिक्स क्या पता, हमें पी नहीं पता फिजिक्स का, हम तो अपना नाव चलाते हैं, काम करते हैं और खुश हैं। कहता है, यू हैव वेस्टेड योर 25% ऑफ योर लाइफ। ठीक है साहब। फिर पूछते हैं, आपको कोई मैथमेटिक्स आता है ना, इतना एडवांस कर रहा है पूरा वर्ल्ड, और आप नाव चला रहे हो। तो कहता है, सर साहब नहीं आता है साहब, क्या करें। तो बोलता है, देखो यू हैव वेस्टेड नाउ 50% ऑफ योर लाइफ। अब क्या होता है, इतने में बोट के अंदर पानी भरना शुरू होता है ना। तो नाविक पूछता है कि साहब आपको स्विमिंग आती है। कहते हैं, नहीं आती। तो कहता है, साहब यू हैव वेस्टेड योर 100% ऑफ योर लाइफ। नहीं, आपने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी कितनी, 100%, बिकॉज यू कैन नॉट स्विम। नहीं, the moral of the story is we cannot measure the advancement on the basis of our, we cannot measure the happiness on the basis of the advancement, नहीं ऐसा। ठीक है। हाँ, क्या है ऐसा कि हम इतनी एडवांसमेंट करने के बाद भी सर खुश नहीं है। तो हम आपको यहाँ पर, वी आर नॉट हियर टू डिमोटिवेट यू, बट वी आर हियर टू टेल यू द पर्पस ऑफ लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ?
that how can you become happy for eternity, for 24/7. When you sleep you are happy, when you wake you are happy, you are happy in every situation of your life. नहीं, अभी क्या है, लोगों को क्या लगता है, सर जब मैं दुखी होऊंगा ना, उसके बाद जब मेरे को हैप्पीनेस आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा हमें परसेप्शंस होते हैं, बिकॉज वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ रिलेटिविटी, है ना। जब हम किसी चीज को रिलेटिव वर्ल्ड के, व्हेन वी कंपेयर द थिंग्स विद द रिलेटिव थिंग ना, ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। सिमिलरली व्हाट वी सी कि सर जब दुख आएगा तभी तो मैं खुश रह सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। नो माय डियर फ्रेंड, हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अनहैप्पीनेस, है ना, कि आप कितने दुखी थे पहले, उससे खुशी आपकी डिपेंड नहीं होती, बट हैप्पीनेस इज द मैटर ऑफ एटर्निटी, है ना। So there's a difference what distinguish between a happy person and but sorry, this verse is quoted here. It differentiate kaise we are different, we have a higher purpose than whom, than the lower species, the other entities, living entities, है ना। And what is that, we'll now let you know. आहार निद्रा भय मैथुन च समानेत पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समाना, है ना। व्हाट इज द वर्स इज सेइंग, इट इज सेइंग देयर आर फोर क्वालिटीज, है ना। आहार, आहार मींस फूड, निद्रा मींस स्लीप, भय मींस फियर, मैथुन मींस मैथुना means, it means, I'm just skipping the word, English word. Methun means sleeping, eating, mating, है ना। So that is sleeping, eating, mating and defending. तो ये जो चारों कार्य हैं, लोगों को लगता है इसमें मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी, है ना, फूड में मिलेगी, नींद में मिल सकती है, या फियर प्रोटेक्शन करेंगे, बड़ी बड़ी साइबर सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करेंगे, और मीटिंग, है ना, मीटिंग मीन्स यू आर अट्रैक्टेड बाय द ऑपोजिट जेंडर। बट अब ये देखो, ये चारों चीजें दे आर ऑल कॉमन, क्या बता रहे हैं, पशु भी समान, है ना, दिस इज कॉमन इन एनिमल्स ऑल्सो, और वो हमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, नहीं। आप देखोगे तो कि जो बियर्स हैं, जो पोलर बियर्स होते हैं, जो हाइबरनेशन में जाते हैं, तो हमसे ज्यादा 6 महीना सो सकते हैं वो, तो दे आर मोर एडवांस इन दिस क्वालिटी, नहीं। सम एनिमल्स आर सो फिरोशियस, है ना, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, है ना, दे आर मोर एडवांस्ड, है ना। आहार, we have a limited diet, we can eat maybe a two we can eat a 250 ml 350 ml only food at one time, but ahar, the elephant, you see, the elephant can eat tons in one meal, no. So they're more advanced in these things, no. Defending, mating, you see, they can produce number of childrens, they can meet unlimited times, but we have a capacity, right? So ahar, nidra, bhay, methun, eating, sleeping, mating and defending are the common things which we can see in animals also, and we can see in the more better way they're doing it, है ना। they do not need advancement for it, नहीं, कभी देखा है कि एनिमल्स ने एक बहुत अच्छा बंगलो बनाया टू एंजॉय, नो, स्टिल। सो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस क्या है, धर्मो ही तेषा अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना, धर्मा, द धर्मा is what makes a difference in them and us, है ना। जो धर्म है वो क्या करता है, डिफरेंस बनाता है, किसके अंदर, बिटवीन एनिमल्स and between animals and humans. And what is dharma? Dharma is the real constitutional purpose of a human being, है ना। How can be happy, we are just there's a one very incident, एक story है, जैसे ये lady, an old lady went to a pet shop, है ना, एक ओल्ड लेडी पेट शॉप गई है, वहां से शी बॉट अ वेरी वंडरफुल गुड मकाओ पैरेट, है ना, मकाओ पैरेट, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पैरेट, है ना, मकाओ लेके आई, एंड शी परचेज अ गोल्डन केज फॉर इट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गोल्डन केज उसने परचेज किया, और उसने क्या किया, उस केज पे अच्छे अच्छे डायमंड्स लगाए, ठीक है। और वो वुमेन क्या करती थी, डेली डेली क्या करती थी, उस केज को बहुत चमकाती थी, साफ करती थी, शी यूज्ड टू पॉलिश दैट केज डेली, बट क्या हुआ,
ग्रेजुअली यू कैन सी, ग्रेजुअली हमने उसने देखा कि जो वो मकाओ था वो धीरे धीरे वीक पड़ता गया, और एक दिन क्या हुआ, द मकाओ पैरेट डाइड. सो बताओ व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दैट लेडी. क्यों मर गया? वो तो बहुत अच्छी केयर कर रही थी मकाओ, शी वाज केयरिंग वेरी नाइसली फॉर द केज, इतना अच्छे से पॉलिश कर रही थी, डायमंड्स लगाए थे, बट स्टिल द मकाओ वाज गेटिंग वीकर वीकर एंड वीकर डे बाय डे. व्हाट वाज द डिफिकल्टी? लेट्स सी हाउ मेनी कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. क्या डिफिकल्टी थी, बताइए. हाँ, थैंक यू ध्रुव. है ना, ध्रुव इज सेइंग द डिफिकल्टी वाज कि शी वाज नॉट फीडिंग द मकाओ, द पैरेट. वो फीड ही नहीं कर रही थी उसको. व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट, फीडिंग द पैरेट और क्लीनिंग द केज? क्या इंपॉर्टेंट था? अदर पीपल कैन आल्सो, अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो रिप्लाई. क्या इंपॉर्टेंट था, मकाओ को अच्छे से फीड करना या उस केज को बहुत साफ करना? फीडिंग, फीडिंग, यस, थैंक यू अखिल. है ना, थैंक यू अंश. फीडिंग was more important, no? The cage can be an iron cage also, right? Similarly, what is happening, we are just looking at the externals, है ना, we are trying to maintain our body, no, we are trying to maintain our externals, but we forget that we have to feed our soul also, है ना. The soul within, है ना, that need to be satisfied, and then what will happen, will be happy eternity, and will be happy. So that is dharma, the religion, the faith. Dharma is not religion, it is a faith, है ना. For example, what is the dharma of a sugar? बताइए आप सब, धर्म क्या है एक चीनी का? Sweetness, very nice. What is dharma of salt? What is the dharma of salt? Sour. Okay. What is the dharma of fire? Others can also reply, apart from Dhruv, who is an intelligent boy, and I know others are also very intelligent, but still they're a little bit shy. What is the dharma? Yeah, burning. No, light and heat, basically. So similarly, so dharma is not religion; it is the nature, है ना, the nature. ठीक है? So dharma means that it differentiate between animals and humans. Thank you. So next. तो ह्यूमन बीइंग्स हैव हायर इंटेलिजेंस, विज्ञानमयी. अभी तक हमने तीन कोर्स डिस्कस किए. द फोर्थ वन इज विज्ञानमयी. वी शुड ट्राई दैट, वी शुड कम टू दिस, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेयर वी क्वेश्चंस आवर एग्जिस्टेंस. भाई, व्हाई आई एम सफरिंग? नहीं, मैं सफर क्यों कर रहा हूँ? मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी मैं सफर करता हूँ. Then to inquire the purpose of life. What is the purpose that I am here? Every human being have a higher purpose in this life. Our purpose is not just to eat, marry, and drink, right, and be happy. No, we cannot be happy by that philosophy. We have a purpose of life. How to harmonize our life with God and nature, and to attain eternal happiness. So this is Vigyan. Matlab, he is now questioning about his existence. Right? Yes, we'll take questions in the end. And then comes Anandamayo Abhyasat. Anandamay, transcendental to all this field of activities. कि now I am finding happiness within. वो कैसे हो सकता है? वो वो बहुत ज्यादा टेम्पर, मतलब आप एक इन्फोर्स नहीं कर सकते हो कि सर मैं एकदम मेडिटेशन करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, और एकदम एक केंद्र बिंदु पे जब ध्यान लगाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा. दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ माइंड. नो, eternal happiness and the happiness within means that when you connect, है ना, that is called yoga. तो योगा शब्द का मतलब, हमें कई बार जब हम सुनते हैं ना योगा, तो हमें क्या लगता है, योगा का मतलब क्या है, हमें जाके कुछ आसन करने होंगे, योगासन, है ना, जिससे मैं मेरी बॉडी फिट रहेगी. नो, द डेफिनेशन ऑफ योगा इज to connect. And to connect to whom? To connect to the absolute person who is absolute. When you connect to him, then what happens? You'll be situated in
blissfulness, happiness. Right? That is yoga. And Krishna teaches various types of yogas in Bhagavad Gita. It begins with Karma Yoga. Krishna in the 3rd chapter of Bhagavad Gita talks about Karma Yoga. Then he talks about Ashtanga Yoga, Jnana Yoga. But he concluded it with Bhakti Yoga. The Bhakti Yoga is to connect with the Supreme, with the Absolute. It is not कि भक्ति योगा is for an old people. भक्ति का विषय यार क्या है, मेरे को क्या बता रहे हो सर? No, भक्ति means what you are doing. You have to do that. भक्ति कई बार हम सुनते हैं ना, भक्ति शब्द में लगता है कि क्या होगा सर? Sir, I have to get into the, I have to go to Himalayas and sit there and meditate. No, you live in our hostels. Still, you can perform that yoga. You can connect to the Absolute, and we'll see how we can connect it. And gradually, what happens? You become happy. No, so this is so. So Bhagavad Gita, shloka number 22, chapter number 6. है ना, ये लब्धा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचलते. So what that verse says, the verse says कि यम लब्धवा चापरम, you will find happiness in, when you find happiness, the eternal happiness, then manyate nadikam tatha, then what happens? Then you never departs from the truth, and upon gaining this thing, there is no greater gain. और जब when you situated, अब इस position पे situate हो जाते हो, so ना दुखे ना, then you never become distressed, and you become always happy. And vichlete, and vichal मतलब do not shaken, even in the midst of dukha, greatest difficulty in your life, still you will be happy. Okay, and how can it be achieved? So it's a very simple mantra meditation, sonic meditation. There are various types of meditations, but the best meditation is when you chant, when you meditate. So this is a very wonderful verse, which is a wonderful mantra, that is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And when you chant on this mantra, you engages your mind, which is the most difficult thing in the youth, कि अपने mind को engage कर पाए. And when your mind become peaceful, then everything becomes peaceful in your life, and you become more dutiful, and you remain happy. Okay, so this is the concluding of the session, and now I like to take some questions. Okay. So thank you, Abhishek sir, for the wonderful session. Now the students can ask their questions and write in the chat box also, and can speak also. So if anyone has a questions, can speak and write on chat box. Thank you. Good evening, sir. Good evening, sir. Gopal from Noida. Yes, Gopal. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम अपने स्ट्रेस को, जो आपने बोला था कि हैप्पीनेस को कैसे सर्च किया जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि हैप्पीनेस का व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ हैप्पीनेस? What is the main purpose of happiness? Yes. This is actually, do you want to be happy or not? I'm not happy. You are not happy, but you want to be happy or not? We want happy. We want to be happy. So this is the natural instinct, no? In every Yes. human, he wants to be happy. So there's no purpose behind happiness. We want to be blissful always, and we don't want stress in our life. We don't want happy. We don't want anxiety. That is what makes you happy, no? So that is not, there's no purpose behind happiness. If there would be some purpose of happiness, why would everyone be searching for happiness? He must say no, that I don't have the purpose to be happy, so I'll be always distressed. मैं हमेशा stressful रहूंगा. But no, we want happiness. That is why. So you can continue your question now.
Okay. So, yes, and this is not the end actually, Gopal. We'll more discover about happiness in our sessions. This is just what we have studied, ki how the happiness, the levels of happiness we have seen, and how can we happy. You know, when we meditate, then what happens? Our mind become cool. You know? We become stress free. We can more focus on the life aspects, and we will study more about Bhagavad Gita in our upcoming sessions. Okay. Yes. Anybody else? Thank you, sir. Thank you. So if anyone has any another question, so we can ask to Abhishek sir now. Okay, Excuse me, sir. everything is fine. I have a question. Okay, okay. I have a question that what if I don't care about anything, about happiness or sadness, anything? Can you repeat? What about them? Can you repeat your question? Sorry. My question is that what if I don't care about sadness or happiness? What's then? If you don't care about sadness and happiness. Yeah. Okay. So now my question is that then what we care about? Actually, we cannot be emotionless. No? Then what will be the difference between a robot and a human being? आप बताओ अगर अगर robots में क्या difference होगा? Robots हमसे ज़्यादा perfect काम कर सकते हैं. No, they can work very wonderfully. They can do the tasks without mistakes. अगर हमने उनकी programming अच्छी कर दी है, they can do everything, everything. The best research, the best recordings, the best analysis, everything without an error. But there's a difference between a human and a robot. That is our emotions. No? So if we become emotionless, then how will express in our life? We'll just like robots working. No? So that does not mean that we do not want happiness or sadness. No, we care about it. And you are a genuine seeker. That is why you're questioning. No? Yes, I understand that, but I still have a doubt that we also know that emotions are temporary and they could change anytime. Okay, yes. So why do we care to be happy or sad? Emotions are temporary because we tend to find them in those objects which are temporary itself. That is why. नहीं हमें क्यों लगता है वो टेम्पररी है क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी चीजों में खुशी तो ढूंढते हैं पर हमें मिलती नहीं है फिर हम कंक्लूड क्या कर देते हैं यार इन सब चीजों का काम नहीं है लाइफ में बट अगर हम इमोशनलेस हो जाएंगे तो हमारे पास लाइफ में पर्पस भी नहीं होगा काम करने का व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ वर्किंग हमें क्या लगता है कि मैं जब जॉब करूंगा मैं स्टडी करूंगा देन आई विल बिकम हैप्पी और आई अचीव समथिंग दैट इज व्हाट मेक्स कि हमें खुशी चाहिए सैडनेस एंड दैट विल कम इन लाइफ बट यस अभी इमोशंस को हम टेम्पररी बोलते हैं बिकॉज वी फाइंड जैसे आई सेड इन द क्लास वी ट्राई टू फाइंड दिस ऑल थिंग्स इन दोज लिमिटेड थिंग्स दैट इज व्हाई so then when we'll go for the higher purpose in life then we can see that happiness is eternal blissful no? Yeah. Also, I still have a question. Yes. You know, all this wisdom, it works for if a person wants to live a happy life, right? Yes. But my question is that what's the point of it, of all this? I mean, why are we even born? we'll discuss it that why we are born what is the what was the purpose that's really nice of you Shivam that you are now doing the Vijnanamay you are understanding it and you are questioning the purpose of your life and I'm really happy for it you have that courage to ask questions why I was born many students ask me this question why I'm suffering no what अगर भगवान को इतनी सफरिंग देनी थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया why I was born. So we'll do it in the next section. We hold on. And also I have a question that what if I don't I mean I don't want to live. I mean I don't like I don't like the concept of being born and born about death and life and anything. I don't like the concept of life indeed. Don't be so hopeless in your life, Shivam.
we'll definitely deal about all these things of like death, birth, old age, and diseases. Why we have, what is the reason behind it. Actually, I cannot say tell you in a short span of time. It requires a whole session for it. No, so don't be so hopeless in your life. Be confident, be happy, and meditate. So we'll meet next week. Till then you can start meditating on this mantra what I say you, and then you find a positive change in your life. And I can surely say you that. So start chanting, start meditating for a few minutes on this mantra, and then you'll see the emotions or the hopelessness you are having in your life, you'll have some hope. No, yeah, that is one. Okay. Okay, I understand it. Thank you for your nice inquiry. I'm really happy. So anyone else has other questions? No questions? Okay. So let's thank you, Abhishek sir, for giving your prestigious time to us. Actually, sir is very busy and we have a very hectic schedule. So sir ने time निकाला हमारे लिए. Thank you very so much, sir. तो हम सर तो एक्चुअली हम लोग ओके तो एक्चुअली अब हमारी सीरीज जो है यहाँ की कंटिन्यू रहेगी we'll meet next Saturday, next Sunday also. We are a new exciting sessions and a new exciting enthusiastic speaker. And तो आज क्लास में हमने we got to learn the secret of getting happiness. एंड हमने कई सारे स्टेप्स समझे कि हैप्पीनेस किस किस स्टेप्स में मिल सकती है, व्हाट इज हैप्पीनेस. एंड सो आप में से कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा which you have learned from today's session and which you like from today's session? Anyone? What you learned most in today's session? Anyone? ओके सो अगर कंक्लूजन देना हो सेशन का तो आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी जो सर अभिषेक सर ने सुनाई थी, जिसमें एक लेडी थी, वो पिंजरे को साफ कर रही थी. इज क्लीनिंग द पिंजरा साफ कर रहे थे, बट वो द ही इज नॉट फीडिंग द पैरट, इज नॉट फीडिंग द पैरट. सो व्हाट्स द रिजल्ट? द पैरट डाइज. So same way, we are not feeding our soul, we feeding our body. We getting हम so much अपना body का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं. We take care so much of our body necessities and other things, but we do not take care of our souls. So it's maybe the reasons that we are happy in distress and happy. So let's meet again in another sessions. So thank you so much for patience hearing. See you again, and thank you so much for joining. Okay, thank you so much. Bye.